yesterday at a rally in Rai Bareli in Uttar Pradesh as part of the Bharat Jodo Nyay Yatra. An ITV network colleague of ours was assaulted in full public view of Rahul Gandhi, of course, is leading that yatra. Thankfully, our colleague is fine. We will be looking at this story in greater detail and, of course, getting more reactions on it. But first, to just tell you what exactly took place yesterday and now what needs to happen next, I'm being joined by my colleague and editor-in-chief of NewsX channel, Rishabh Gulati. Rishabh, over to you. What needs to happen now next? Just help set the tone and tenor of our special telecast today. Look, Uday, as citizens of this great country, we now embrace the sort of energetic and vibrant milieu, which is the defining fabric of political rallies in their quintessentially organized chaos. There is none amongst us hobbled by naivete who, living in some auras of hubris, does not embrace the rough and tumble of reporting from the streets. Pushing and shoving amid crowds can and does happen. Yes, at times on the fringes, there are over-enthusiastic, misguided, emotional pageantry that takes place that can cause unbecoming scenes. Worse and often, lumpen elements with little connection to a civilizationally conscious leadership can perform acts which are undesirous of the moral makeup that is sought by purposeful organizers. That is not the easily accepted and readily digested course of events that has unfortunately played out in Rai Bareli yesterday. There are reasonable reasons for a strong and public critique of the best practices and ethics of the Fourth Estate. It is to be demanded of us journalists that we are not the forums for unbridled invective and deleterious dramatics, that we are neither bought, bribed or bullied. For heaven's sake, those exact critiques are debated and discussed on NewsX itself with some of the most erudite intelligentsia, jurists, citizens, diplomats and veterans. We have that conversation right here. We practice what we preach. For those of you who watch us and judge us assiduously, you'll note that this is not the forum for ribald rancor and venomous vitriol. Our purpose has to be to raise the bar, not skedaddle below it in the garb of journalistic freedom. This is not a forum where we value or encourage shouting, screaming, ranting or roaring, where effort is made to make respectful points. Now you see the full video of events that have unfolded. A reporter is videographing a rolling speech for a large length of time. There are several minutes to this. When an opportunity to pose a question arose, what was the question asked? Will Akhilesh ji and Priyanka ji be partaking in your rally? It was neither an obnoxious question, nor was it voiced as such. There was a physical distance between said reporter and the politician, non-intrusive of any question of physical personal space of an individual. Even amid a public and crowded rally, this is not invasion of privacy. This was not even instigation by heckling. The question could have been ignored, laughed off, it could have been answered. What followed was a diatribe on names and caste, and then an assault. Now, the very fact that the political leader has to subsequently plead mat maro, belies the events that were transpiring. Now, one should reasonably assume that the said was not intended. One should reasonably posit that it was something unfortunate and not in keeping with the ideals being espoused in this rally. Our reporter is not grievously injured or incapacitated, but he has been roughed up. The vernacular would be hattapai has taken place. One expects sagacious equanimity, not semantical maleficence from seasoned political leaders rallying
for a party with an ethos of serving the people of this country since before independence. The assault did not occur on the fringes or without the knowledge of the center point of the rally. In fact, right before his very eyes. There is no plausible deniability. Words and the manner in which they are spoken that may be seen as instigation could have been righteously shunned. At the very core of the surrounding cadres, amid tight security, one would assume and expect calmness and maturity, not ruffianism in a state of metastability. Rahul Gandhi is free to say what he wants in his perceived duty to what his great-grandfather said, the service of India and her people. And he will remember that that very gentleman is fondly recalled as Pandit Nehru. I leave it to discerning viewers to do the interpretive caste identity of the Pandit cognomen. The reporter himself was Shiv Prasad Yadav, an OBC. There is much more that needs to be done towards ameliorating opportunity lost due to long-standing caste distinction. People of all hues, surely all of us can agree on that. Roughing up reporters is not the happy circumstance. It leaves a bad taste in the mouth. Illustrious effort should be underway to amend the same. We are yet to witness any, but remain hopeful that maturity and the force of logic will lead to proportional action taken. Any political leader, free to speak, free to answer, not answer, free even to criticize the media, free to champion whatever just cause he or she might see reflective of the need of the hour. But you can't sit in a foreign country, in a foreign university, you can't sit in Harvard and be decrying the purported decay of press freedom and thereafter tolerate an assault on a correspondent under your own eyes and carry upon the Ganges like it never happened. This happened. Ballistics and bald-faced rancor should not be expected of us either. We are not going ballistic. This is not the only issue or only story in the country. We aren't on it 24/7. We are simply raising a principled point for the health and safety of a valued colleague, and we reasonably expect it to be addressed readily in the same spirit with which it has been raised. And that's the sum total of it, Uday. Absolutely, Rishabh. Stay on with us. In fact, you couldn't have put it better, but we also want to now get in a quick word from a senior political voice joining us from government, Minister and Member of Parliament from Ghaziabad in the Lok Sabha. General V.K. Singh is joining us live. General V.K. Singh, is it justified, according to you, for a senior leader like Rahul Gandhi to behave in this manner with a reporter, to behave like this with our ITV network colleague? Well, I saw this flash that had come in and what actually happened. And I would categorically say, not only senior leader, but for any leader, this kind of behavior is unexpected. This kind of behavior does not go with the traits of a leader. It was a simple question. You could have given a simple reply and gone with your task. But to berate, to create a situation where your supporters can create a ruckus and even assault the reporter is absolutely unpardonable behavior. Do you think that Congress should apologize and launch an internal inquiry to ensure action in this incident? Well, I would say, firstly, the leader himself should have apologized by now. And it is part of leadership. You have made a mistake. It has happened because of some reason.
Ideally, you should have apologized and absolutely ensured that the situation is brought back to normal. I mean, not only the leader, even the party should look at it to apologize and say this was this is something which was not meant in this way, and apologize. Not apologizing only shows that you have got a major ego problem. Yes. What does it show when Rahul Gandhi asks a journalist about his caste and, ends up inciting his supporters? It shows that we have a very poor leader who's got no leadership skills. How can you even ask somebody the caste thing? What are you? Are we living in a society where everybody is asking for caste and for a leader to do so? This, that if you look at Modi ji, who says, look here, there are only 4 castes. There is Garib, there is Yuva, there is Mahila, and there is Kisan. Rest, there nothing exists if you are looking at the progress of the country. But here we have the Congress icon who wants to know what is the caste of the reporter. How more low can you stoop? I'm sure, General VK Singh, you must have seen that entire video clip and sequence of events. What do you make of Rahul Gandhi's body language? What does it really show? It shows a person who's internally absolutely ruffled. Mm-hmm. He doesn't know what he's saying. He is only trying to create a situation and in a combative manner, he wants to get some cheap publicity for himself. Now, in your vast experience in public life, have you ever seen a senior politician behave like this? No, I have not seen. I have not seen. It is absolutely uncalled for behavior. All right, General VK Singh, thank you very much for joining us with your perspective on this big story. Let's also get in some more reactions coming in. Union Minister Kaushal Kishore has also reacted on this incident. Remember, he's a very prominent leader from Uttar Pradesh. Let's quickly listen in to what he has to say. हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, रायबरेली पहुंचते हैं, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं। महज वो सवाल होता है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अखिलेश यादव न्याय यात्रा में क्यों नहीं आए, और वो बौखलाए नजर आते हैं। हमारे रिपोर्टर पर उनके आदमी हमला कर देते हैं, रिपोर्टर से वो खुद ही जाति पूछने लग जाते हैं, तमाम बड़े सवाल उन पर खड़े कर देते हैं, तमाम बड़े सवाल इंडिया न्यूज के मालिक पर खड़े कर देते हैं। देखिए, राहुल गांधी को ना जाति का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न धार्मिक ज्ञान है, और जिस यात्रा को निकाल रहे हैं न्याय का नाम दे करके, उस यात्रा के बारे में भी राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। वो तो कभी भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद विदेश यात्रा, न्याय यात्रा, फिर उसके बाद विदेश यात्रा। अभी देख लेना 2-3 दिन के अंदर फिर उनकी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। उनसे कोई सवाल न करे, वो केवल लोगों से सवाल करे। राहुल गांधी का ये नेचर है, और इसीलिए राहुल गांधी जी जब कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उनसे जो है बदतमीजी भरी बात करते हैं, या कॉस्टिज्म की बात करते हैं, या जाति पूछने का बात करते हैं, या उनके साथ के लोग जो हैं वो पत्रकारों से बदतमीजी भरी बात करते हैं। और ये जो है एक तरीके से मीडिया के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, क्योंकि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, उनका साथ सब छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में पूरा जैसा एक तरीके से बड़े पैमाने पर टूटन पैदा हो गई है। जो भी समझदार व्यक्ति है वो अब कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये थे कौशल किशोर जी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क।
कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जब रायबरेली में हो रही थी, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शिव प्रसाद ने जब ये सवाल किया कि इंडिया गठबंधन से क्या बातचीत चल रही है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही हैं, इस बात पर राहुल गांधी नाराज हुए और उन्होंने मालिक का नाम पूछते हुए उनके लोगों ने बुरी तरह से शिव प्रसाद जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्हें पीटा। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पत्रकार समूह को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह अराजकता गुंडई पर उतारू हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं का किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में कोई ये स्थान नहीं है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे जो बता रहे हैं कि इस तरह से कांग्रेस की अराजकता बिल्कुल ठीक नहीं है और पत्रकारों को भी इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस किस तरह से रवैया अपना रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। केशव इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, भारी तादाद में आज ज्वाइनिंग हुई है, आगामी चुनाव को लेकर सभी दलों में भगदड़ है। भाजपा मजबूत स्थिति में है, सभी 80 सीटें हम जीत रहे हैं और जो श्री राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में केवल गुंडागर्दी हो रही है, पत्रकारों तक को के साथ मारपीट की जा रही है। मैं उसकी आलोचना करता हूं और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई भी शिकायत मिलने पर करेंगे। न्याय यात्रा कल उन्होंने इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ भी मारपीट की और गलत तरीके से पेश आए, क्या कहना है? यही बात कह रहा हूँ ना कि जो उन्होंने पत्रकारों के साथ घटना की है वो हमारे लिए चिंता की बात है और किसी राजनीतिक दल के लिए यह शोभा नहीं देता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जनता के बीच में उनकी कुछ चल नहीं रही तो पत्रकारों के ऊपर खींच उतार रहे हैं। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। ये मैं इसमें निंदा करता हूँ, ये गलत बात है। अब सोचिए, ये उनकी अगर सोच है तो कहाँ तक क्या पहुँचेंगे, देश के बारे में क्या सोच सकते हैं। जो आदमी जात के नाम पर पूछे, जात की बात करे और जात खुद पूछे एक पत्रकार से या किसी भी से पूछे तो वो कितना सोच सकता है किसी जात के बारे में, ये आप समझिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तरुण चुग जी मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इंडिया न्यूज के पत्रकार पर हमला कैसे देखते हैं आप? पिछले 7 दशकों से गांधी नेहरू परिवार की 4 पीढ़ियां लगातार अहंकार के मद में तानाशाही से इस देश के अंदर कभी आपातकाल लगाकर मीडिया पर अत्याचार करती रही है। और मैं तो हैरान हूं, जिनकी गाथा इस देश के अंदर पिछले 7 दशकों में अन्याय की लिखी हुई है, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिनका इतिहास अन्यायों से भरा पड़ा है, लोकतंत्र से अन्याय, 1984 के सिख कत्लो गारत में अन्याय, देश के अंदर भ्रष्टाचार की पद्धति निकालने के लिए अन्याय, हर विषय पर अन्याय करने वाले लोग आज न्याय का झूठा बहाना डालकर जनता के बीच में पत्रकार से जाति पूछते हैं, जाति पूछकर उसको पीटते हैं। ये है लोकतंत्र। अरे, देश का मीडिया है, आपसे प्रश्न पूछना, क्योंकि आप एक बड़े घराने के युवराज हैं तो युवराज से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। सर, प्रश्न की बात पे याद आया कि जो इंडिया न्यूज के पत्रकार थे उन्होंने सिर्फ महज ये पूछा था कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, और इस पर भड़कते नजर आए राहुल गांधी। 8वीं बार लॉन्चिंग हुई है राहुल गांधी जी की और 8वीं लॉन्चिंग भी फेल है। ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, हताशा है, निराशा है, कुंठित मन है। उस कुंठित मन में मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं। रस्सी जल गई पर अहंकार नहीं गया। क्यों पूछ रहे हैं आप जाति किसी की? अपनी बुखलाहट है तो पता है, आप जनता आपको लगातार नकार रही है। यही था ना 2 भाइयों का जोड़ा आपने एडवर्टाइज किया था। अब यूपी आए हैं तो बताना पड़ेगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस समय कहां है। तो ये पूछना क्या अपराध है? बंगाल के अंदर बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पता नहीं कहां है। 2 भाइयों का जोड़ा कास्टिज्म पे लड़ाई कर रहा है। ये अब अहंकार और परिवारवाद की भ्रष्टाचारी वंशवादी जो पॉलिटिक्स है, ये 2024 उसका अंत है। देश की जनता इन हताश, निराश, कुंठित परिवारवादियों को
नकार चुकी है। जो हमला पत्रकार पर हुआ है वो कठोर निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की राजनीति के अंदर काले अध्याय की तरह है। जिस तरह इमरजेंसी में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, ये उसकी याद करा रहा है। तो ये थे तरुण चुग, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। राहुल गांधी ने कल इंडिया न्यूज़ के पत्रकार से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उनके जो कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी द्वारा जब उनको सवाल पूछने पर जो है बौखलाहट देखी, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदसलूकी की। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कविंद्र गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कविंद्र जी, क्या लग रहा है इस तरह से पत्रकारों पर भी इस तरह से बेहताश होना? देखिए, जब INDI गठबंधन के प्रमुख जो घटक हैं वो जहाँ जाते हैं, उनको जो स्थानीय ये जो INDI गठबंधन के साथी हैं वो भी ऑन नहीं करते, तो स्वाभाविक बात है अकेले घूमते घूमते जो हताशा है वो सामने नज़र आ जाती है। प्रेस पर प्रहार करना कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी से लेकर के इमरजेंसी में जिस प्रकार से रुख अपनाया गया था, वही इनकी खानदानी आदत है। तो मुझे लगता है कि ना तो कांग्रेस स्वयं उनको ऑन कर रही है, मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं, और हमने देखा जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं कई जगह तो ऐसा है कि एक भी व्यक्ति साथ नहीं है, जो जीप पे बैठे हैं वही लोग हैं। मगर पत्रकारों के साथ इस तरह से बदसलूकी करना, क्या लगता है इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकायदा? बड़ा निंदनीय विषय है। पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो सभी सही बातें सामने लाती है और हर व्यक्ति को कड़े सवाल भी पूछती है, वो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। तो इस प्रकार से कभी उनकी जाति पूछना, कभी जाति की जो बात बनती नहीं है उस प्रकार से उनको सवाल कर रहे हैं। तो एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, इस प्रकार से उनका कहा जाना बहुत निंदा का विषय है। और उनके कार्यकर्ताओं ने जो एक पत्रकार पर हाथ उठाया वो भी गलत है, इससे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.